Assalamualaikum viewers. Welcome to VTeach24. Myself, Dr. GhulamUllah Lail, Assistant Professor, Medicine and Light, Consultant Gastroenterologist. We are here to discuss the upper GI bleed. Once patient is having the obscure or the overt GI bleeding, that is definite visible. Overt is definite visible, but that if that is obscure, where from the bleeding is happening, that is from the small intestine. If patient is presented with the hematochezia, urgent colonoscopy. If source is identified, we may treat. If no source identified, upper GI endoscopy or the push enteroscopy. Here you see push enteroscopy just to see if the lesion, if the bleeding site is in the small intestine. At times the overt bleeding that is visible is obscure as well. Obscure is the bleeding site is not been seen on the routine endoscopy. Even if on the push enteroscopy you have not found anything, and then the colonoscopy up to terminal ileum is no source has been identified, we can consider capsule endoscopy. Capsule endoscopy is a basically form of the endoscopy in which a pill, that is a capsule containing an camera and a battery with half-life of around with a battery life of around 12 hours, and that takes images as we eat. हम जैसे खाने का निवाला लेते हैं जो कि इसोफेगस में जाता है, स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, कैप्सूल भी बस इसी तरह से पानी के साथ निगल लिया जाता है। वो हर स्टेशन पे अपने डिफरेंट एंगल से दायरा रोटेट करता है तो वो इमेजेस ले लेता है, और फिर वो इमेजेस सॉफ्टवेयर की मदद से हम कंप्यूटर पे देख लेते हैं। अगर कोई भी सोर्स आइडेंटिफाई होता है हम ट्रीट करते हैं अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर कोई सोर्स आइडेंटिफाइड नहीं हो तो हम या तो लेप्रोटोमी करके इंट्राऑपरेटिव एंडोस्कोपी करते हैं, या फिर वो तब करते हैं जब डीप एंडोस्कोपी यानी कि पुश एंटेरोस्कोपी से भी अगर हम आगे जा सकें तो भी कोई सोर्स ना मिले, तो फिर हमें ये करना है कि सपोर्टिव केयर दें, क्योंकि कोई सोर्स तो आइडेंटिफाई हुआ नहीं है। और इससे में हम एक एडिशनल यानी कि हम सीटी स्कैन कर सकते हैं, सीटी एंजियोग्राफी कर सकते हैं। सीटी एंजियोग्राफी से भी हमें पता चल जाता है कि कहाँ हो रहा है। ये सब ऑब्सक्योर की सिचुएशन में होता है, लेकिन जब ओवर्ट जीआई ब्लीडिंग में कहीं हमें डेफिनेट इंडिकेशन है, कोई चीज़ें मिल रही हैं, तो हम उसके हिसाब से मैनेज करते हैं। ये टेबल हमें शो कर रहा है कि क्या क्या कॉजेज़ हैं। सबसे कॉमन कॉज है पेप्टिक अल्सर फॉर द अपर जीआई ब्लीड, एंड द अदर is the second most common is gastric or the esophageal varices. So in upcoming slides हम लोग ये दोनों का ट्रीटमेंट ऑप्शंस पढ़ेंगे और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो हमने देखने हैं। तो जैसे पेशेंट ब्लीडिंग के साथ आएगा उनकी क्या क्या कंप्लेंट्स हो सकती हैं, हेमेटोकीजिया होगा, मिलेना होगी, या जो है पेशेंट को हेमेटेमेसिस है, हम उसके हिसाब से पेशेंट को क्लिनिकली असेस करेंगे। हमने क्लिनिकली असेसमेंट में क्या क्या किया था, हमें रिस्क स्कोर्स थे, एम्स, ग्लासगो ब्लैचफोर्ड स्कोर और रोकाल स्कोर। जब वो स्कोर्स कर लिए हैं तो एक फ्लो डायग्राम दिखाया था जिसमें हमने ऑब्सक्योर अपर जीआई ब्लीड के लिए देखा था। लेकिन ऑब्सक्योर ब्लीडिंग हर वक्त नहीं होती, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये हमें कोई ना कोई कॉजेज़ में से, इन कॉजेज़ में से कोई कॉज मिल जाता है। हम रिस्क असेस करते हैं पेशेंट को, रिस्क फैक्टर, और फिर रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। ट्राइज करना है, ट्राइज ऑफ द पेशेंट्स टू हायर लेवल ऑफ द हॉस्पिटल केयर एंड मोर अर्जेंट एंडोस्कोपी। ये ट्राइज हम स्कोरिंग टूल्स को यूज़ करते हुए करेंगे। स्कोरिंग टूल्स के दो बेनिफिट हैं, हमें एक तो रिस्क ऑफ मॉर्टिलिटी बताते हैं और दूसरा हमें रिस्क ऑफ रीब्लीडिंग बताते हैं। प्री एंडोस्कोपी स्कोरिंग ऑफ नॉन वेराइसल ब्लीडिंग
like the Blatchford score, clinical Rocall score और the न्यूरल नेटवर्क स्कोर और M65, जिनमें से हमने 3 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, M65 रोकॉल और ब्लैचफोर्ड स्कोर. Pre-endoscopy administration of the PPI is a cost-effective treatment option, and the optimal effective PPI dose after endoscopic hemostasis is uncertain कि कितना टाइम ड्यूरेशन के लिए देना चाहिए, लेकिन जो इफ़ेक्टिव डोज है वो डोज है कि हम 80 मिलीग्राम बोलस दें फॉलोड बाय 8 मिलीग्राम पर आवर फॉर एटलीस्ट 3 days. और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन या इंटरमिटेंट डोज भी दे सकते हैं, बट दैट टू फॉर एटलीस्ट 3 days. डोज क्या हुआ पीपीआई का? 80 मिलीग्राम बोलस followed by 8 milligrams per hour. Somatostatin and Octreotide. IV administration of the somatostatin and the long-term octreotide decreases the risk of the rebleeding from peptic ulcers. ये both the treatment options are available, but the preferred is the PPI. These should be considered in those patients who have the ongoing severe bleeding that is not responsive to endoscopic therapy and IV PPIs. So the vasoconstrictive treatment options are not the treatment options of the choice for the peptic ulcer bleeding, but these are the treatment of the choice for the varicose bleeding. And this may be considered in those patients in whom the peptic ulcer bleeding is severe and is ongoing, and the endoscopic therapies or the intravenous PPI has not stopped that one. Endoscopic therapy. A therapeutic endoscope should be used to allow the adequate aspiration. Patient should be resuscitated medically prior to the endoscopy, and if needed, prophylactic endotracheal intubation or the use of an esophageal overtube to minimize the risk of airway aspiration. Once endoscope is inserted, first thing to look is the blood in the GI tract, and any visualized adherent fresh blood or the clot should be followed to find its origin. जैसे एंडोस्कोप इंसर्ट किया, ये सब चीज़ें हमने करनी है कि हम देखें कि कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, और if too much blood is present in the stomach to allow the detection of the bleeding lesion, we need to give the prokinetic agents, that is erythromycin or the metoclopramide should be considered, or the gastric lavage may be done, and this all needs to be done when the patient's upper GI endoscopy has been performed and there was too much blood. If too much blood, definitely we cannot visualize where from bleeding is happening. तो हम प्रोकाइनेटिक एजेंट्स एरिथ्रोसिन दें या हम मेटोक्लोप्रामाइड दें तो उससे इफ़ेक्टिव हो जाता है. अगर और ज़्यादा ब्लड नज़र आया हो तो हम गैस्ट्रिक लवाज भी कंसीडर कर सकते हैं. पेप्टिक अल्सर में हमें देखना है कि पैथोजेनेसिस क्या है, व्हाट इज़ likelihood and what is the probable cause of the peptic ulcer that has bled. That is either aspirin, NSAID, H. pylori infection, or all these combination of these multiple mechanisms, then we will treat accordingly. And what are the different poor prognostic score for the hemorrhage from the peptic ulcer? If age is more than 60 years, if bleeding onset has happened in the hospital, if the patient is having the multiple comorbid illness, if patient is presented with a shock or the orthostatic hypotension, or if the fresh blood is seen in the NG tube, or if there is coagulopathy, multiple transfusions are required, or the patient is having the duodenal ulcer bleed because of the gastroduodenal artery, or the endoscopic finding of the active arterial bleed or the visible vessel. These are the poor prognostic markers. If these are being seen on endoscopic intervention, or if patient has been assessed with this age is greater than 60, or if any of them, then definitely patient is having the
poor prognostic markers. So you see shock or orthostatic hypotension. You see, just you are assessing the blood pressure, the basic element. So the approach in almost all the medical emergencies is same. You will follow the clinical examination starting from the vital sign examination, and the endoscopic examination depends upon the situation of the endoscopic view. We'll see, as we have discussed earlier in the peptic ulcer diseases as well, the peptic ulcer disease on the endoscopic intervention, you'll see one of these, either active spurting bleeding or the oozing of the blood, non-visible non-visible bleeding vessel, or the adherent clot. So this classification is used because it reveals who are at the high risk of rebleeding and what are the chances of mortality. Here in this picture you can see this is actively bleeding. Here you can see visible vessel, and here you can see adherent clot. So these are three major stigmata of the recent bleeding. This is definite ongoing bleed, this is visible vessel, and the clots. I hope you have understood. Thanks.